Namaskar students, this video is for class 9th, lesson number 8, framing of Indian Constitution. In this video we will study what is the preamble and the importance of the preamble. So let's start. First, what is the preamble? This is the preamble of our Indian Constitution. Preamble is the core part of the Indian Constitution. Preamble gives the ideas and the highlights of the Indian Constitution. Preamble is the soul of the Indian Constitution, and our Constitution starts with this preamble. So this is about the preamble. The Indian preamble, the Indian Constitution is the world largest constitution. तो पूरा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ आप प्रीएम्बल अगर आप अच्छी तरीके से समझ लोगे तो you can get idea regarding about the Indian constitutions. So let's start. What is in the preamble? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. Sovereign, that means the Sarvabhaumatva, means in India after the 1947 the Indian people rules only, not the foreign rulers. Our country under only the Indian rules, only our own rules, not foreign rules in our country. That means the sovereign. India is a sovereign country, Sarvabhaumatva. सोशलिस्ट समाजवादी राष्ट्र है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड रिपब्लिक. अल्टीमेटली द पावर ऑफ दिस कंट्री इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, द पब्लिक ऑफ द नेशन. सो दैट इज द रिपब्लिक. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल सेज जस्टिस टू ऑल द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. समान रूप से सबको न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय तौर पर. दैट इज जस्टिस टू इन ऑल द स्टेज, ऑल द पीपल. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. द लिबर्टी ऑफ थॉट इन द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज द राइट टू फ्रीडम, and that right to freedom of speech, right to freedom of expression. We have also right that we have perform any religion in our country. So belief, worship, पूजा, प्रार्थना, आप किसी भी मानना चाहते हो धर्म में, कोई भी संप्रदाय में, so you are free. That is the liberty of free of these things. Equality of status and opportunity. Equality of status, right to equality. There is no any kind of the discrimination in our country on the basis of the caste, creed, language, religion, region. So no any kind of the discrimination. The equal status given to all the citizens of our country, and also gives the equal opportunities, equal chance to all the people of our nations, political, social and economical. Fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. Fraternity, that means bandhuta, brotherhood. So by this brotherhood we can maintain our dignity of our nation, we can maintain the unity of our nation, the integrity of the nation. बंधुता से ही, ये ब्रदरहुड से ही, फ्रैटर्निटी से हम अपने देश को एक सूत्र में रखेंगे, एकता के अंदर रखेंगे और यूनाइटेड रखेंगे. इंटेग्रिटी, दैट मीन्स अखंडितता. So these are regarding about the constitution. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So the constitution makers said that on this date we have completed our Indian constitution on 26th November 1949. And we give this constitution to the people of this nation. So this is regarding about the preamble. The core
the soul, we can say, the important part of our constitution. So this is regarding about the preamble. This preamble unchanged till 1976. You all of you know, otherwise we will also study in the politics science lesson the next chapter regarding about the changing process in the constitution. It is called the amendment process. In the technical language, it is called the amendment process, because we cannot change the constitution, even we cannot change a full stop, comma, word in the constitution without this process. This process is known as the amendment process. This process passed by the parliament from Lok Sabha to Rajya Sabha with the majority, and after the sign of the president, the amendment can possible in the constitution in the preamble. So the first change in our preamble in 1976, and 4 words add in our preamble. These 4 words are socialist, secular, unity and integrity. These 4 words add in our constitution, in our preamble in 1976. सोशलिस्ट, दैट मीन्स समाजवादी राष्ट्र है हमारा, समाज से प्रेरित और समाज की भावना को आगे बढ़ाता हुआ. सेक्युलर, दैट मीन्स द धर्मनिरपेक्ष, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, हैज गिवन द इक्वल स्टेटस इन आवर कंट्री, द इक्वल रिस्पेक्ट इन आवर कंट्री. भारत का नेशनल एम्ब्लेम है, नेशनल, वी हैव अ नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथेम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल रिवर्स, नेशनल फ्लावर्स, नेशनल फ्रूट्स, हमारे बहुत सारे सिंबल्स है. बट वी डोंट हैव अ नेशनल रिलीजियन. भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है. धर्म के मैटर में, धर्म के रिलेटेड में भारत निष्पक्ष है, निरपेक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेता. ऑल द रिलीजियंस आर इक्वल इन अवर country, and that definition is called, that is the secular. Unity, you all of you know, एकता. Integrity, अखंड राष्ट्र, अखंडितता, अखंड भारत है. There is a no state has right to secede, separate from our country, from Kashmir to Kanyakumari, from Okha to Arunachal Pradesh. That is one India, one nation, and that is the integrity of our country, and we have to maintain this integrity for the nation. So this is the 4 words, these are the 4 words add in our Indian constitution. So this preamble gives the fundamental ideas, give the fundamental objectives. Preamble gives the ideas, aims and principles of our constitution also. This is the important part of the preamble. Preamble is also the straight way gives the definitions of the rule of welfare. The India is country under the rule of the welfare. That is, we do not believe in the imperialism policy. We do not believe in the exploitation. Only we believe for the rule for the welfare. हमारा एक ही एम है कि इस देश की जो है वो डेवलपमेंट हो, मानव समाज का डेवलपमेंट हो और शासन से और अनुशासन से हर एक राष्ट्र का निर्माण हो. That is the rule for the welfare. That is the aim behind this constitution, and that is behind this preamble. So by the reading this preamble, we can get idea regarding about our constitution makers. Our constitutions maker the psychology, that what kind of psychology they had, कैसे उनकी विचारधारा थी, किस प्रकार से वो सोचते थे, उनके किस प्रकार से उनकी इमेजिनेशन थी. So we can get idea after reading this preamble of our 389 members of our Constituent Assembly. So by this reading preamble, we can get idea about the ideas regarding about the constitution, what is the formation, what is the idea, and what is the goals behind this preamble and the constitutions. Now we will study the importance of the preamble. So the preamble is the soul of the Indian constitution. संविधान की आत्मा है. Preamble gives the interpretation of the constitution.
इंटरप्रिटेशन मीन्स अर्थघटन करना, मीनिंग बताना, बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी large and so many articles and so many appendix in our Indian constitution. So preamble gives the interpretation of our constitution. If any trouble arise, any confusion arise, the preamble helps to solve this problem, and the constitution problem this troubles and the problem solve the problems by, we can solve the problems by this preamble. So preamble is one kind, give the direction. Preamble serves as a compass, just give the direction. जैसे कंपास का काम होता है डायरेक्शन देना, कोई भटके हुए आदमी को रेगिस्तान में, डेजर्ट के अंदर, सी के अंदर, कंपास से that he can get direction. So in our constitution the preamble gives the direction to this judiciary, to the people, to the government. सरकार को, न्याय व्यवस्था को डायरेक्शन देने का काम करता है. दैट इज द व्हाट इज द राइट वे टू गिव द जजमेंट एंड व्हाट इज द राइट डायरेक्शन टू रन दिस कंट्री. सो दिस इज द अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ द preamble. So this types of the preamble of our Indian constitution has. So this preamble is backed by the high ideals and goals. The preamble is backed by the high ideals. उच्च विचारधारा के 389 मेंबर्स, जो एक बहुत ही बड़ी उच्च विचार और उच्च विचारधारा के जो लोग थे, उनके आइडियाज ये प्रीएम्बल के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी कैन सी द आइडियाज, द आइडियल्स ऑफ हाई आइडियल्स एंड गोल्स ऑफ आवर इंडियन कंट्री. क्योंकि भारत को हमने सिर्फ 5, 50 साल, 100 साल के लिए आजाद नहीं करवाया है. ये देश सदियों तक रहेगा, सदियों तक चले, इस तरीके से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना प्रीएम्बल बनाया है. ये कोई टेम्पररी डॉक्यूमेंट नहीं है. दिस इज अ लाइव डॉक्यूमेंट, दिस इज अ परमानेंट डॉक्यूमेंट. सो दिस डॉक्यूमेंट्स द is backed by which high goals, and it is the high ideals of our Indian constitution makers. So this is regarding about the preamble. In the next video we will study the pillars of the preamble. There are the 3 pillars of preamble of our Indian constitution: democracy, socialist and secularism. So these 3 topics we will study deeply in our next video. Thank you.